the investors, shareholders, partners available on the call. Today, on the event of earning release of H1 FY 2025-2026, from Oriana side, we would like to give a lot of insights about what we have been doing in the last H1 and what we'll be doing for next 1 year or more. So, I'll request my co-founder, whole-time director, Parveen Jagra, to give a quick brief about what we have achieved in the last quarter, last H1. Parveen, over to you. Thank you, Rupal. A very good morning to everyone. So just for highlighting about the presentation, this is safe harbor. I think we can move on to the next slides. So these are major plans about the company which we have delivered till last H1. And as you are aware that the company is more than 12-year old. So that's also a milestone for all of us. The total revenue of H1, I think this is consolidated, right? Yeah, you can put in crores also. Yeah. Plus 78 crores. 781 crore plus. So, yeah. 781.18 CR was the consolidated number for H1 of FY 2026. And with the support of all stakeholders and support of the team members, we have achieved is credit rating of CRISIL. We have upgraded from BBB+ to A rating, which is A- stable is the rating currently. Total strength of the team member has improved, and we are reaching 350 plus people as on date on Oriana Power platform. My apologies for interrupting. Sorry everyone for this. The slides are not changing. Everyone is messaging about that. Can we look into that, please? So we are on the slide by the heading of Oriana Power at glance with the total 12 number of rectangular boxes. Is it visible that way? No. We are still on the main cover slide. The slides are not changing. Allow us to. Can we please? Screen. Now it looks fine. Yes, now it looks fine. Please carry on. Thank you. Yeah, I think Parveen resumed. So before he resumes with his numbers, I would like to highlight one very important message from Oriana Power team to RE team. Earlier, we started this journey as a pure solar EPC company. But with the time and with the support of the team and all the stakeholders, we have been improving and improvising our strategies and the plans. So today we don't call ourselves as a solar EPC company barely. We are now into three domains of the energy side. So we are now a generator company. We are into storage. We are into consumption. That means we are covering whole value chain of the RE domain.
That is through solar, wind, hybrid, or with the battery energy storage, or maybe in future we might add other options of storage like pumped storage. And consumption side also, we have started adding green hydrogen e-fuels, which we'll be talking during further slides. But we would like to highlight this is something which we have added, and we are very, very, very focused into this segment of the business for next few years. Over to you, Parveen. Thank you, Rupal. So this moving here. I think the slide is visible. Amijit, please confirm. Yes, yes, perfectly fine. Please carry on. Yeah. So I was just mentioning that we are more than 12-year-old company now, and we are successfully reaching the milestone which we are targeting. And this is a milestone for all of us that we have crossed a decade. About the numbers of H1 financial year 2026, we have crossed a number of 781 CR, 0.18 CR as in consolidated. And with the support of all team members and our lenders, we have upgraded our credit rating from triple B plus to A rating. So now the rating is A minus, which is again a achievement for all of us that we have migrated from B rating to A segment. And rated by CRISIL. Total employee strength is also increasing day by day. Now we have crossed the number of 350 plus people. These are all on board on Oriana. Project capacity, as on date, we have crossed 575 megawatt. This is an EPC capacity which we have delivered till date. Out of that, there's additional execution work is also going on, having a capacity, cumulative capacity of 550 megawatt plus. These are all projects which are under execution. On renewable energy target by 2026 March, we are targeting to be 1 gigawatt plus as an EPC company. Solar capacity. So in terms of order book, we are already gigawatt company, but probably with the project delivery capacity basis, will be gigawatt company from March onwards. That is the target we are setting ourselves. We have a very good pipeline for the solar capacity. This you can see, and I think from last couple of months, we are already delivering more than describing about the projects which we are getting. So we are having a pipeline of 2 gigawatt plus. The best projects also contributing in our portfolio. So we have added a capacity of 800 plus megawatt hour of battery energy storage projects. These are the recent like 6 month achievement for all of us. And we are hoping for better in coming future as we are already participating in multiple projects on the west side. As you can see that 2 gigawatt hour is our pipeline for the battery energy storage, which we are targeting in coming year of time. Green hydrogen, as Rupal mentioned, that we are on the consumer side is also adding value. So green hydrogen or ammonia or derivative of hydrogen going to be the consumption side profile of our company. And recently we got awarded of 60 KTPA of green ammonia. 60,000 MTPA. 60,000. Yeah, 60 KTPA. Yeah. 60 KTPA is the annual production capacity for green ammonia. And this agreement will be signed with the central PSU, SECI with the support of, and this project is, we have a timeline of 3 years from the signing the agreement. This is the consumption side profile also we have started. As in solar or any of renewable projects, land and connectivity is the major challenge. So we are trying to secure that side also, and more than 3,500 acres of land has been acquired in Oriana Power for further development of renewable energy. Please move on to the next slide. Yeah.
These are standalone numbers for H1 of 2026. So, yeah, sure, Mark. Would you like to come up with something? Sure, please. Members, at financial highlight for H1 at standalone levels, our revenue from operation 764.48 crore, at PAT 121.70 crore, and basic EPS 59.89 per share, EBITDA 171.57 crore, and PAT margin 16.001% at standalone level. And at consolidated level, financial highlights, revenue from operations 781.18 crore, PAT 121.63 crore, basic EPS 59.77 per share, EBITDA 181.74 crore, and PAT margin 15.57%. So that means we have been improving and maintaining the past performance and going strongly for the future growth also. Now measuring our financial progress on consolidated basis. So revenue has grew 2.17 times to 781 crores from 359 crores. EBITDA increased to 181 crores from 78 crores. PAT grew 2.5 times from 48.57 crores to 121.63 crores. Debt equity ratio has decreased. Now it's 0.50 or precisely 0.49. It decreased from 0.69. So last presentation में थोड़ी सी error थी. Now we are correcting it. The current EPS is 59, and last year EPS was 24, and the current ratio is 1.54 as of now. It was 1.67. I think we can skip this particular slide. So we are skipping this balance sheet slide. Achievements and group. Would you like to take up this one? Yeah. So on the generation side, we have commissioned Rajasthan's first group captive open access project. We have secured open access grid connectivity. As Praveen has mentioned, grid connectivity is very important, and it is across Rajasthan, Haryana, Tamil Nadu, and other states as well. We are ensuring future growth is in line with the pipeline of Haryana Power. Ensured robust execution by expanding the land secured by 600 plus acres. We have added 600 plus acres. Now cumulative capacity is 3,500 acres. Yeah. Secured Haryana first open access project in Gujarat. So this is our second project in Gujarat. Commissioned the largest project in Goa under virtual net metering policy. We have already delivered group net metering, virtual net metering in Delhi. Now we are moving to another UT, Union Territory, with the largest project in Goa. We have also achieved L1 position. This is the benchmark for Haryana Power. We are expanding now to globally, transiting from an SME company to a MNC company. We have achieved L1 position for a solar project in Latin America. That is through Exim Bank, and we are expanding global footprint now. LOA is awaited. Now on the storage side, we signed BESPA for 100 megawatt hour of capacity in Rajasthan. Again, we have signed BESPA agreement for 100 megawatt hour in BESS capacity in Tamil Nadu. 170 plus megawatt hour C&I order secured for solar and BESS. Clients को ढूंढने जाना नहीं है. उन्हीं के लिए we are having large. So probably if you all remember from the past con calls, we have been always talking about why Haryana is a kind of a unique position in terms of C&I market base, because we have the clientele which has the kind of relationship for more than now 4 years, 5 years, 6 years. So same client को अभी solar दे रहे थे. Now same client is asking for the BAS solution or hybrid solution. Same client is gonna ask for the hydrogen or derivative hydrogen as a fuel option. So that is somewhere that is we have a very strong position because we are to the consumption market. We are into B2B market largely than the B2C market or government market. Best part is that our C&I clients are AA and AAA rated. So that is very important for any company or any SME company that is transiting into MNC company. Right.
Then 450 megawatt hour BESS are expected to be signed within 2 months of timeline. Now, on the consumption side, we have forayed into green fuels. We have been talking about this vertical since last almost 1.5 year. Similarly, for the BESS opportunities, we have tagged this opportunity, and इस टाइम पर मैक्सिमम VGF वाले प्रोजेक्ट ओरियाना पावर के पास है। इस समय अच्छे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट ओरियाना पावर के पास हैं जो अब बिडिंग आ रही हैं। सो वी हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड आवर ऑर्डर बुक। तो हर टेंडर में ओरियाना को पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर द कंपनी व्हिच इज लाइक focusing on profitability rather than bidding projects and taking orders, because we know in these segments execution is the key to success, not order book. So we forayed into green fuels by receiving allocation of 60,000 MTPA green ammonia as well as 10,000 MTPA green ammonia from SECI. This ensures an annual recurring revenue of 313 crores, but this revenue will come after 2028. So previously we were doing solar, now we are doing BESS, and in future pipeline is secured for green hydrogen. We have tied up with different companies across different ecosystems, like in Egypt, like in Latin America, like in Japan, like in Korea. So on the corporate side, the CRISIL rating, as Praveen has mentioned, increased from BBB stable to A- stable. We are focusing on this thing because we know that as we are also recycling our assets, our target is to reach to that level of InvITs after 3-4 years, and we know that AAA rated is mandatory for those things to attract good sponsors. So we are targeting on that thing. We are very focused कि क्या करना है, and also it is very clear क्या नहीं करना है. We have accessibility to surety bond for AMD PPGs. Now it is resulting in better capital management and larger participation in tenders. Emphasis on cyber security, strengthening governance and digital security standards of the company. We have recognized as great place to work. We have strengthened our team by over 100 strong members of Oriana Power from 250 in March 2025 to 350 plus as on date. We have added another office space that Rupal has talked about in last AGM. So another 35,000 square feet is now Oriana team के लिए बहुत ज़्यादा expansion जरूरी है, उसके लिए हम time पर सारे step ले रहे हैं. So there are strategic collaborations for a sustainable future. We have signed an MOU with Invest Alberta for RE complex from $300 to $500 million. We'll raise funds from there only. And yes, Canada is a slow country, so it will take time. हमें आज जरूरत भी नहीं है, but we are preparing this thing for future to come. After 2 years, after 3 years, ओरियाना कुछ ना कुछ तो करना है और डिफरेंट ज्योग्राफीज में करना है. उसके लिए आज से हमने बेंचमार्क बनाना शुरू कर दिया है. थोड़ा टफ था हम लोगों के लिए भी, क्योंकि बीइंग SME कंपनी, बट थैंक्स टू आवर शेयर होल्डर्स के उन्होंने हमें इतना प्यार दिया कि हम जहां भी जिस कंट्री में जाते हैं वहां पे लोग ओरियाना को आज जानते हैं. Signed a joint development agreement with Actis GP LLP for development of 1 gigawatt of RE asset under their platform. उनका जो नया फंड लॉन्च हुआ है with funds of $100 million equity committed for the period of 2 years. Under this agreement, Oriana will act as the project development and turnkey partner for Actis. So this 1 gigawatt is somewhere around 1,000 crores, which will give good profitability, because it's not about a regular EPC contract people. It's more than that. It's Project about development. It's about project development. We have been mentioning in our last slides as well that we are having 4 products. We are into solar, BESS, and CBG, green hydrogen. But we have different models as well, in which we are doing EPC, we are doing IPP, we are doing deferred capex, and the fourth one was very important, which we have mentioned in our last 2 slides. Last 2 presentations, in which we are developing projects for different institutional funds, different InvIT funds. That is very important, because in EPC it's difficult to get margins every time, but with these type of framework you can do things differently, and आपकी आने वाली जो फ्यूचर की चीजें हैं वो सिक्योर्ड हो जाती हैं. एक बार एक बड़ा फंड आ गया, then definitely Praveen is working on a fund with for BESS, for hydrogen. Now we are in radar of big funds, institutional funds, and InvITs. So the value of these kind of development or joint agreements is, one, you get the secured business. So you can see 1 gigawatt is the secured business from one platform. Second, it gives secured
profitability. You don't have to fight with the open market, with your peers about the competition on the numbers, because their simple fundamental is what is the return they are getting. To achieve that, we need to develop the project from the scratch, start from the land, connectivity, the PPA, and then, kind of EPC development. तो वहाँ पे मारामारी नहीं होता है कि अभी कितना EPC पर वॉट का रेट किया जाने वाला है. So that is also one of the things is there. And the fourth one is that allow you to structure your overall company and the planning. So that means I am secured, I am comfortable and available with the fund of $100 million. इसका मतलब है मेरे को कितना टीम एक्सपेंशन करना है, किस ज्योग्राफी में करना है, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है. So all those things are very much available and clear on the table right today for these kind of development. So it gives a lot of easy, kind of handling to the management. कि मेरे पास मेरी planning clear है. So that is very important aspect. I think we all should read this word to word. What is the meaning of it? Just adding to this, this 1 gigawatt portfolio which we are developing with Actis. So lending part, that the debt side will also be in the books of Actis, into the Orient. That's also giving a leverage to the Orient. So we are planning to recycle assets year on year. It will become a regular business for Oriana Power, not one-time business. So every year we'll keep recycling it. To 38 megawatt, we have already recycled. 200 megawatt is in final talk, and another 200 megawatt which is under construction is also going towards it. So it will be a regular practice. It will not be like that कि एक बार कर लिया वो तो income में आ जाएगा. It's not like that. So it will be a regular business. हरियाणा की नेटवर्क को बढ़ाना बहुत जरूरी है, because we are in capital intensive business. By doing EPC, by doing tenders, we know कि एक level पे increase हो सकता है. But एक्स्ट्रा माइल चलना, एक्स्ट्रा लेवल पे जाना, एक्स्ट्रा टीम और एक्स्ट्रा एफर्ट, वो एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ही हो सकता है. In capital intensive business, whatever happened in unlisted space or other spaces, if you'll see across the globe, this fund is a very big fund, and it's a Rupal. $110 billion American Atlantic. It's a part of American Atlantic Fund. So we are engaged with top licensors in green hydrogen and its derivatives for technological collaboration. Esprit is supporting us well. We have signed an MOU with the government of Rajasthan of 10,000 crores. So this is not merely a MOU. So we are getting good support from Rajasthan government. We are getting good support on land development. We are getting good support of connectivity things. So इस तरह के MOU से फाउंडेशन सेट होती है इन फंड्स की, क्योंकि अगर आपके पास नहीं है, लैंड नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है, यू कैन नॉट अप्रोच देम. सो इट्स प्रीटी डिफरेंट. जो हमने एक्शंस लिए थे, अब हम उन एक्शंस को कन्वर्ट कर रहे हैं. So we have already initiated actions for a 685 megawatt solar power plant and 104 megawatt hour BESS. We have signed an MOU with government of Madhya Pradesh of INR 5,000 crores for integrated renewable energy solutions with actions initiated on land and connectivity. Land is already secured. MP government has already allocated land at 1 rupee per meter for 30 acres land for development of this project. And this project is very special project. It's an integrated complex of green ammonia, e-methanol and CCUS. So CCUS is very important thing. We are entering into this space as well of carbon capture, because कार्बन प्राइसिंग मार्केट इंडिया में थोड़ी सी अब रेल पे आनी शुरू हुई है. ऐसा नहीं कि आज आ गई है, बट ये रेल पे आनी शुरू हुई. वी आर एक्सपेक्टिंग इन 6 months एक बड़ा आउटले जो ग्रीन हाइड्रोजन के बराबर है, उससे बड़ा आउटले इस इंडस्ट्री को मिलेगा. सो वी आर टारगेटिंग दिस इंडस्ट्री CCUS, एंड यू मार्क माय वर्ड, CO2 will become the next gold. I repeat, CO2 will become the next gold in next 5 years. So we are tracking this thing, and it's part of our consumption thing. E-methanol is part of our consumption thing. Green ammonia is part of our consumption thing. Data center is part of our consumption thing. So we are working very hard on consumption side. We signed an MOU with government of Assam of 500 crores for integrated renewable energy solutions. Action initiated on land and connectivity. आप लोगों को एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि ओरियाना कैसे अपने आप को मार्केट में ऐड रखता है और रख सकता है, कैसे कॉम्पिटिशन में फाइट करेगा, इतना सारा मार्केट में सोलर EPC वैसा रहा है. सो आई थिंक you people would understand and appreciate to the extent कि we have been tweaking our strategies, we have been playing with the different tools and tackles within the system. कि हमारे पास जब EPC अपॉर्चुनिटी था, हमने EPC किया, फिर हमने टाइम से पहले BESS मार्केट में एंटर किए. अभी कुछ क्वेश्चन है जिनमें BESS की बात होने वाली है कि BESS में अभी मार्केट में प्राइसेस कम हो गए हैं. सो व्हाट इज योर स्ट्रेटजी? वी विल बी आंसरिंग दोस क्वेश्चन.
So likewise, we were aware about the BESS में थोड़ा सा ये market में price pressure आने वाला था. So consumption is something which is readily available, and I'm telling you, this is something not for today. This is something for the future. So our strategic partnership with Actis, it's a transaction overview. Also, please note that it's a very confidential thing. It's a US-based fund. We cannot reveal all the information. We are also bound by NDA and other things. So we'll give small brief about it. Will not be able to give much details. Hope you will understand our situation as well. So it's a 238 megawatt solar power plant sold at an enterprise value of $108 million. Marks a landmark capital recycling milestone for Oriana Power. 15-16 कंपनियां होंगी हाल ही में जिन्होंने कैपिटल रिसाइकलिंग इस लेवल पे करी है. मतलब हमसे बड़ी बहुत है, बट टोटल मिला के भी 15-20 कंपनियां, 15-16 कंपनियां होंगी, इससे ज्यादा नहीं होंगी. So 1 gigawatt joint development with Actis. This जो ये डील है 238 मेगावाट की, इट इज डिफरेंट. ये अलग है 1 गीगावाट का. में एडिशनल जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट है वो एडिशनल है, इससे अलग है. So that 1 gigawatt will be leading to a revenue generation of 4,000 plus crores in next 2 years. Actis will invest up to $100 million in equity. So उसके बाद debt भी आएगा, project cost will be somewhere around close to number what I have quoted over the next 2 years. So strategy impact is capital recycling for growth. We have unlocked our capital to accelerate Oriana's next phase of RE asset development, exclusive EPC and O&M mandate. Oriana remains by exclusive EPC and O&M partner, boosting revenue and margins. Significant development, premium portfolio monetization, deliver strong value for Oriana execution capabilities. Now, execution is meeting with financial engineering. So that is very important when execution meets with financial engineering. Praveen, would you like to highlight something? So when we say EPC is usually मार्केट में बहुत मिल जाते हैं प्रोजेक्ट, और बहुत सारे प्रोजेक्ट निकलते रहते हैं, तो वहां से हम प्रोजेक्ट EPC में ले ही सकते हैं. लेकिन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट को डेवलप करके उसको एक स्टेबल एसेट फॉर्म में लाके उसको रिसाइकिल करना. सो दैट विल गिव ए लिवरेज वैल्यू टू द इन्वेस्टर आल्सो, जो भी उसको ऑफटेक कर रहे हैं. और हमारे लिए वैल्यू एडिशन भी आता है बीइंग एन EPC प्लस द एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी. और जो एसेट हमने बना के दिया है सामने एंटिटी को, उसके लिए वो लिवरेज वैल्यू कर रहा है. एंड दैट्स द हाउ द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑफटेकर और जो भी EPC मतलब इन्वेस्टर उसमें उसको टेक ऑफ कर रहे हैं, वो हमें लिवरेज करते हैं उस फाइनेंशियल वैल्यू से. तो जो हमारा प्रीमियम या मार्जिन जो EPC में यूजली होता है 5-10% का, जैसे भी रहता है इंडस्ट्री प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग, this margin will be better than that because we are adding in financial value to the investor. So this deal will give extra margin of around 7 to 8%. जो हर किसी का क्वेश्चन रहता है कि भाई कितना एक्स्ट्रा जाएगा. EPC मार्जिन के अलावा जो ऑलरेडी Oriana is maintaining whatever the margin we are maintaining, उसके over and above रहेगा. And it will strengthen our IPP position as well, because आप एक लेवल तक प्रोजेक्ट अपने कस्टमर के लिए कर सकते हैं. एक बार वो बोलता है यार आपको 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट दे तो दिया, अब आगे प्रोजेक्ट आपको देना पहले आप कर तो लो. बट विद दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स, नाउ वी आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन एक टाइम में मल्टीपल प्रोजेक्ट हम लोग कर सकते हैं और बिगर साइज से कर सकते हैं. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स अबव 100 मेगावाट. So global advantage with Actis, backed by global investing, managing around $12.5 billion AUM, combining with a general Atlantic format, $96 billion platform supporting competitive financing and superior project bankability, stronger client base, enables access to AAA rated customers across EPC and IPP segment, and most important, shareholders value creation, reinforces trust, long-term growth, and strengthen market capitalization. If you can skip this particular new project added to the growth story. No. So this is something which is Already declared. Generation storage, consumption story, largely we have talked about. Is there any specific points you would like to for the strategy? So on the generation side, we are obviously इस साल हमें 1 gigawatt करने हैं total cumulatively. We are engaging with global funds for development of their assets and asset recycling, leading to a significant top line revenue and increased margin profiles as well. I will repeat, it will increase margin profiles as well. Now we can pursue larger project opportunities, achieve
through compliance with tenders requirement or revenue network and execution capabilities. Now we have also introduced our tailored solution for C&I clients focused on enabling their net zero objective. So जितने भी top 250 companies हैं, they have ESG mandate और we are targeting those segments only जहां पर नेट जीरो ऑब्जेक्टिव है. सो पाइपलाइन बहुत क्लियर हो जाती है. अभी जैसे कोई सीमेंट कंपनी है, उसका टारगेट 20% पूरा हुआ है और उनको 2035 तक नेट जीरो होना है. सो 80% कैपेसिटी आती रहेगी बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ग्रीन एनीमोर. सोलर पावर इज चीपर देन कोल पावर. इट्स अ रियलिटी. जो उनको भी पावर मिल रही है 6-7 रुपए 8 रुपए मिल रही है, वो 3 रुपए की पावर अगर उन्हें मिलती है और अगर वो ईपीसी करवाते हैं तो उनको लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी समवेयर अराउंड 1.5 रुपीस पड़ती है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ती है. तो इट्स लाइक म्यूचुअल सॉल्यूशन टू देम. On the storage side, we are expanding further into BESS with grid efficiency. So grid, Rubal, can you talk about some grid issues चल रहे हैं? I think Praveen is the most appropriate person. Praveen. तो स्टोरेज में जैसा ध्रुव ने अभी बताया कि सीएनआई कंज्यूमर जो है वो हमारा मेन पोर्टफोलियो कैरी कर रहे हैं. एंड सीएनआई कंज्यूमर में जो हम रिन्यूएबल डायरेक्ट लाइक सोलर पावर इंस्टॉल करके जो हम मीट कर सकते हैं उनकी डिमांड, दैट वी हैव ऑलरेडी मीट. नाउ द स्टेज सेकंड स्टेज में हम उनको क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, दैट्स द स्टोरेज कम्स इनटू प्ले. कि आपका जो बैंकिंग फैसिलिटी है वो लिमिटेड है हर स्टेट का, हर रेगुलेटरी का. अगर हमें एडिशनल आवर्स में उसको बैकअप या रिन्यूएबल पावर देना है, देन वी हैव टू गेट स्टोरेज साइड आल्सो इनटू आवर रिन्यूएबल पोर्टफोलियो. तो सोलर को इसके स्टोरेज जैसे ही ऐड करते हैं, वी नीड टू ऐड द accordingly RE power like solar also storage के साथ, because additional energy requirement is there to meet their round the clock requirement. तो उसको meet करने के लिए हमें storage का support लेना पड़ता है. That's how we are seeking कि C&I consumer से हमें storage का बहुत demand आने वाला है. And that's how we are planning कि almost 50% of our capacity in coming 2 years will be contributed from our C&I consumer. So we are developing new revenue streams in the C&I segment through energy as service models as well, enhancing institutional coordination with MNRE, SECI and state utilities to support policy development. We are engaging with InvITs and institutional funds in storage segment as well, because we know profitability lies there. For asset development under their platform for maximizing profitability. Now consumption side, development of green hydrogen and derivatives, we are scaling up our production from current capacity that is जो 60,000 tons per annum हमें मिली है. So we'll increase it to 2 lakh जो इस समय हमारा इजिप्ट में प्लान चल रहा है और इंडिया में प्लान चल रहा है और यूपी में प्लान चल रहा है. यूपी का प्लान में बस वो लास्ट स्टेज में है. ऑब्वियसली जो पॉलिसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की, हमें उन्हीं के साथ चलना होता है. So it is taking time. होप वो जल्दी क्लोज हो जाएगा with all those things, with MP thing, UP thing, with Egypt thing and other things. Easily हमें we can reach this target of 2 lakh tons per annum by financial year 28. We are engaging in emerging hydrogen hubs such as Haritmala, Harit Sagar. If you search for Haritmala and Harit Sagar, बहुत बड़े-बड़े projects हैं. It will change the face of ports in Oriana Bhava. सबको green बनाया जा रहा है. हरित सागर की पॉलिसी आ गई है, हरितमाला की पॉलिसी आ गई है. So these policies are very crystal clear policies. 16 हब बन रहे हैं हाइड्रोजन के. अगर उसका हमने एक छोटा सा पार्ट भी ले लिया तो revenue will be in thousands of crores. We are developing e-methanol and green ammonia export channels targeted as key market Japan, Europe, and Egypt. We are doing strategic entry into carbon capture, utilization, and storage. Industry as carbon pricing market has started taking shape in India. Carbon pricing market almost it's taking shape. It's under initiative of National Carbon Capture Initiative, Government of India, and we are definitely will try to get maximum command on CO2. Praveen, strategies for sustainable growth. Okay. You start. So we are partnering with technology leaders on energy management systems and energy trading and artificial intelligence as well. There are strategic engagement with large conglomerates, IITs, Government of India, DST on research and innovation. So we are participating in this ecosystem as well now. Initially, it was like a bread and butter for Yana Power. Now we are participating in ecosystem at larger scale basis. जिसमें हम यूनिवर्सिटीज के साथ, IITs के साथ और डिफरेंट conglomerates के साथ पायलट प्लांट और वो सब भी लेके आ रहे हैं.
We are undertaking solar assets recycling to support reinvestment into new projects and enhance capital efficiency, which is very important because we are in capital intensive industry and we know a capital intensive industry ke liye you need capital. So every time we cannot go to market and keep diluting ourselves. So this is the better strategy. We are developing green energy enabled solutions for data centers as well. Now we are focusing on high growth geographies within India, targeting geographies, conducive policy environment, robust solar potential and significant industrial demand such as Haryana and Andhra Pradesh for scalable RE deployment. Rupal, will you talk about Haryana a little bit? Yeah, I think even the last presentation also, we have talked about what is our focus areas. So typically, we tend to be focused into the states or geographies where competition is not that high, or these are the untouched or new states or new geographies. So as a strategy, we started this thing with the Rajasthan almost 2.5 years before. So that's been very, very successful. And today in Rajasthan itself, we are doing more than 600 megawatt of solar and more than 400 megawatt hour of BESS. Likewise, we explored one more states, so we entered into Haryana. So that's been now more than a year now. So Haryana, mein today we have 300 megawatt of land and connectivity secured with the orders also in hand. And Haryana is one of the good industrial state we all know, but with the lot of challenges in terms of land availability, it's very fertile land. So that way we have an edge over many big or small developers in the state of Haryana. So likewise, Andhra Pradesh is something which is opening up, and that is where we are entering into Andhra Pradesh. And Chhattisgarh is also something we are exploring. It's a good industrial state, again, little bit of challenges on the land side. So that way, we are not too focused into the states or like Gujarat or Maharashtra. Yes, these are the good states as well, but somehow we believe like, a lot of big or small companies are there in these states with a lot of competitive prices. So we doesn't fit, I would say, rather than we would say it's a competitive market. Probably we believe in the profitability, so not the very strategic position for us to be there. Even from here on, we'll be exploring a couple of new two states, which we'll not be telling you right today, but yeah, we'll be coming up with two more states in the next presentation, most likely. That diversifying new geographies already we have talked about. Strategic land execution and deployment, that is also we have talked about. So this is very important, Rupal. We are enhancing project efficiency, reducing transmission losses through strategic land acquisition near power evacuation substations. So ROW के issues हैं और उन सब चीजों के issues हैं. हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने power evacuation substations हैं उनके पास strategic land development करें. So that is very important from Oriana point of view. Next point is very important. We are joining hands with project development companies now for acquiring shovel-ready projects for faster execution because हर समय टेंडर में पार्टिसिपेट करना, क्लाइंट के साथ एंगेज होना, समटाइम्स इट्स डिफिकल्ट कि कंटिन्यूअसली वो 6 महीने का प्रोसेस है, 4 महीने का प्रोसेस है. तो अगर हम शॉवल रेडी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं एंड लेते हैं और उसके बाद फिर उसको एग्जीक्यूशन करके वी कैन सेल इट टू बिग फंड्स, सो प्रॉफिटेबिलिटी भी आती है और पाइपलाइन भी क्लियर होती है. एग्जीक्यूशन फास्ट होता है जो हमारी स्ट्रेंथ है. So this is our vision slide. We have changed it little bit. 2030. I'll say this is our vision. It's $1 trillion slide. If you'll see, we have covered solar with 6 gigawatt of EPC capacity and 2.5 gigawatt of IPP capacity, which is gonna develop after 2028. That IPP capacity. We are entering into data centers. We are already into CBG, battery storage, energy storage. में हम लोग we are starting with good things. Now lithium technology is there. We are looking for pump storage as well. And एक अच्छी चीज है जो compact pump storage की तरह आएगी और धीरे-धीरे industry का face change करेगी. We are working on that technology as well. It's a technology shift going on. Yes, we have revised our target of BESS from 3.5 gigawatt hour to 20 gigawatt hour by 2030. Seems aggressive, but it's simple because it was like that. We're targeting 300 megawatt hour in our first year. So currently with pipeline, जो closing pipeline हमारे होने वाली है, already crossing somewhere around 2.8 gigawatt hour. So जो target 2030 का था वो एक साल में ही हो रहा है. That's why we revised our target and it's very. One more thing, this is not aggressive number. Parveen and team is working on one of the project through BESS, which we are not able to reveal right today, the kind of arrangements. But yes, there is something new development, new kind of
energy storage and generation development is happening at our end. It's at the, I would say, working end. Probably we might come up in next 4 to 6 months time with the real projects also announced, where we don't have to participate with any government agency, we don't have to participate with any customer. We ourselves would be a generator, we ourselves would be a consumer, but that too with the energy storage and that too through BESS. So I personally believe this 20 gigawatt hour is not a big number. It's something probably after 1.5 or 2 years we might have to revise it to further up. So let's see how it goes, but it's too early to say for the higher side of number. But yes, this is something which is very, very practically possible to achieve. One more thing which I would like to add is that it's a kind of thing which happened to me yesterday. Yesterday I was with one of the client. It's a cement big client. So उनका एक capacity X capacity है आज उनका. So we were having very casual discussion on the table. तो बोलते हैं कि मेरे को 2030 तक उनको 2030 तक उनको अपना कैपेसिटी जो है उसको 3+X करना है, 3.5X करना है सीमेंट कैपेसिटी. So let's say somebody is at 50 million metric ton, तो उसको 150 million metric ton करना. आज वो 50 million वाला कितना सोलर 500 मेगावाट सोलर यूज कर रहा है, 400 मेगावाट सोलर यूज का डिमांड कर रहा है. तो मेरे लिए बाय डिफॉल्ट सेम कंज्यूमर काइंड ऑफ से अगर रिलेशनशिप में कैरी करता हूँ, मेरा टीम कैरी करता है, तो मेरे पास 3x का बिजनेस उसी कस्टमर से अवेलेबल है डायरेक्टली फ्रॉम द सोलर. नाउ सेम कस्टमर इज आस्किंग फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन, बिकॉज आज भी 8 रुपए की बिजली के रिस्पेक्ट में बेस्ट का बिजली 5 रुपए, 5.5 रुपए, 4 रुपए में द्वारा खाता है उसको. So that is a direct business available. Third most important thing, जब हम बात करें तो अनुज ने एक वर्ड यूज किया compact pump storage. So this is something which we are evaluating as a new product, where a lot of water bodies are there with these kind of cement companies or these kind of customers. उन water bodies को कैसे मैं storage में convert करूँ through pump storage, not through battery. So these kind of discussions and opportunities are always available with Oriana because we have the direct influence with the end customer. तो मेरे लिए कोई एक सोलर एंड नहीं है कि एक कस्टमर के पास गया, सोलर बेचा, उसका कंजम्पशन खत्म और मेरा मार्केट खत्म. नो, दैट इज नॉट द वे. सोलर भी है, हाइब्रिड भी है, बैटरी भी है और बाद में शायद पंप स्टोरेज जैसे ऑप्शंस भी है, और जब इसके बाद भी लेना तो हाइड्रोजन तो फिर हम देने वाले हैं. So it's a long story. We are playing with all these customers, and that's where we are maintaining good relationship. That is very important thing. So this is the latest decision which happened yesterday evening only with one of the founder of the company, not to be even mid management. So it's like bank करना right sir, इसे वाली select. तो ऐसा नहीं है कि ओरियाना मतलब इस तरह कोई प्रोजेक्ट करेगी तो पहली बार होगा. हम लोगों ने राजस्थान का फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर माइंस में लगाया था. प्रवीण, would you like to highlight? एंड बहुत इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है और बहुत डिफरेंट सॉल्यूशन है. सो हम ओरियाना में हम लोग का थोड़ा सा माइंडसेट ऐसा है कि टेक्नोलॉजी को स्टेबल होने से पहले या मार्केट में इकोनॉमिकल कमर्शलाइज होने से पहले उसको एडोप्ट करें, उसको एनालाइज करें और उसको किस तरीके से टाइम से पहले लिवरेज कर सकते हैं, उस चीज पे हमें फोकस करना चाहिए. तो जो फ्लोटिंग का हो गया एक एग्जांपल है, एग्रोवोल्टेक का एक एग्जांपल हो गया, देन हिली टेरेन हो गया, देन जो हम बेस्ट में अपना एक पहले से पोर्टफोलियो कैरी कर रहे हैं ऑलमोस्ट, मतलब जहाँ पे लोगों ने स्टार्ट भी नहीं किया था, वी गॉट एन हार्ड प्रोजेक्ट्स फ्रॉम द बेस्ट साइड. तो सिमिलर साइड में जो कॉम्पैक्ट स्टोरेज की हम बात कर रहे हैं, सो वी आर फाइंडिंग सम पोटेंशियल साइट्स विद एग्जिस्टिंग आवर C&I कंज्यूमर, जहाँ पे हम कॉम्पैक्ट पंप स्टोरेज को स्टेबलिश कर सकते हैं और वी कैन लिवरेज दैट कैपेसिटी. सो डेफिनेटली डिपेंडेंट स्क्रीन जरूरी है और as fast, learn faster, then systemize what works. So definitely we would like to fail fast. अगर कोई टेक्नोलॉजी में जाते हैं, टाइम नहीं लगाना है उस चीज में, लेकिन जब मार्केट मैच्योर हुई है उससे पहले ओरियाना को वहां पे खड़ा रहना है. So in this slide as well, it's green back वाली का, वही वाली का. So green hydrogen and CCUS already बता दिया. Yes, ये इंडस्ट्री थोड़ा स्लो डेवलप हो रही है एंड ओरियाना को भी स्लो ही चाहिए. ओरियाना को बहुत फास्ट नहीं चाहिए. स्टोरेज में बहुत तेज जा रहे हैं, सोलर में बहुत तेज कर रहे हैं, इससे बहुत फास्ट नहीं चाहिए, स्लो एंड स्टडी चाहिए. बिकॉज ग्रीन हाइड्रोजन में मेरा सोलर बेस तो ऑलरेडी लगना ही है. तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स फॉरवर्ड इंटीग्रेशन. कई बार क्वेश्चन आता है बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्यों नहीं? सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर सकते हैं. मतलब इट्स लाइक जो फाइनेंशियल कैपेबिलिटी है, जिस तरीके से प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं हम ऑलरेडी कर सकते हैं. लेकिन जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसमें मार्जिन भी अच्छे हैं, प्रोफाइल भी अच्छा है और यूजेबिलिटी भी वाइड है. जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उसमें कहीं ना कहीं जाके कभी एक्स्ट्रा कैपेसिटी होनी है.
स्टेबल है वो टेक्नोलॉजी, मतलब सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग की, सेल की बात करेंगे तो दोज आर स्टेबल टेक्नोलॉजी, उसमें बहुत लोग हैं ऑलरेडी एंड वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट क्राउड, राइट? सो जो इनफैक्ट जो CCUS भी है, दिस इज नॉट समथिंग वी आर आउट ऑफ स्ट्रीम। तो बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के बाद जो मेथनॉल बनाना है उसके लिए हमें CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी आर कमिंग CCUS फ्रॉम दैट साइड कि CO2 हमें अपने पोर्टफोलियो में हाइड्रोजन में ऐड करना ही है, तो व्हाई नॉट CCUS? So उसमें हम यूटिलाइजेशन तो CO2 को हम ढूंढ ढूंढ के निकालेंगे और सारी यूज करेंगे. So this 1 MMTPA of e-fuels, it's something different. And how we're gonna do it? So we have people now. We have 350 people of strong team, and we have AA and AAA rated clients. On the fund side, we are listed as well now by PE as well. We are among very few companies जहाँ पे PE fund भी है और listed भी है. And the fourth one is very important, artificial intelligence. We are taking it very seriously. We are working on these things since last almost a year now. And definitely you will see artificial intelligence in Oriana Power very soon. So that's what I have said now. This is a clear roller slide. हमें slow and steady focus करना है. I'll definitely convert Oriana from SME to MNC company. लेकिन जैसे बड़ी कंपनीज करती हैं उस तरीके से. वो एडवाइजर में हमारे मैम भी ज्वाइन किए हैं अभी, टॉप में मैंने बताया नहीं चेक तो एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट वी हैव एडेड इनटू आवर बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स। क्लोज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हाँ वो तो ऑफिशियली अनाउंस किया। सो CCUS जैसा हम एक नया स्ट्रीम अपने में ऐड कर रहे हैं। सो one of the industry renowned name, Mr. Sushma Rawat, who is retired from executive director from ONGC, has joined our technical advisory board, and that is where she is leading for this CCUS portfolio. तो वहां से हमें काफी इंसाइट्स है इंडस्ट्री का, और उनका जो ओवरऑल लाइफ एक्सपीरियंस है इंडिया का, शी वाज ऑन टू एक्सप्लोरेशन साइड, सो ग्लोबल इम्पैक्ट नॉट इन इंडिया। तो उसको उनको वो सारा आइडिया है कि कहाँ पे हम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, कहाँ से हम CCUS कैप्चर कर सकते हैं, किस कौन सी टेक्नोलॉजी हम यूज कर सकते हैं। सो दैट्स द हाउ शी विल बी कंट्रीब्यूटिंग टू दिस पोर्टफोलियो इन ओरी। इस स्लाइड को देख के ऐसा भी लग रहा है कि ओरियाना बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमने फंड सॉर्ट किया है, क्लाइंट सॉर्ट किए हैं, लोग सॉर्ट किए हैं, एक्सपर्ट सॉर्ट किए हैं। तो इसके लिए, और इवन अगर हमें सोलर में रेवेन्यू बढ़ाना है, 20,000 करोड़ रेवेन्यू करना है, बिना मार्जिन रिड्यूस किए नहीं होगा, ये सब जानते हैं। अगर हम बोले नहीं नहीं हम कर जाएंगे तो वो गलत होगा। तो एक डिसेंट जो सेटअप है कि जिसमें आपका सारी इंडस्ट्री, आपकी $200 बिलियन की इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, इसमें सारी इंडस्ट्री जो अगर आप देखोगे मोर देन $200 बिलियन इंडस्ट्री, अब इतनी सारी इंडस्ट्री में आप थोड़ा थोड़ा अपना वर्टिकल क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली यू विल रीच 20,000 करोड़ रेवेन्यू बाय 2030। तो सिनेरियो इज लाइक दैट के मार्जिन्स को सेक्रीफाइस नहीं करना है, नई नई चीजों को जोड़ना है और टाइम के साथ जोड़ना है। फॉर एग्जांपल 1.5-2 साल पहले शुरू करना है और 3 साल बाद की विजिबिलिटी रखनी है, ताकि वो चीजें धीरे धीरे करके आए और ओरियाना में प्रेशर भी ना पड़े और एक एक चीज को सॉर्ट करते जाएं। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी विल बी हैविंग डिफरेंट रेवेन्यू स्ट्रीम्स। 3 साल का मैं आपको रेवेन्यू का एक ब्रेकअप दे देता हूँ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोलर बेस किस तरीके से रहने वाला है। सो इन FY26 90% रेवेन्यू विल बी फ्रॉम सोलर, 10% from BESS. Then in FY27 60% is from solar, 40% from BESS. In FY28 30% from solar, 50% from BESS and 20% from hydrogen. उसके बाद solar will remain somewhere around 25-30%, और hydrogen will take its shape, और hydrogen will cover 40% and other services will cover 40%. And BESS जो है that will play a major role in next 3 years of Oriana Power, and hydrogen will also play a big role in these things. So I would rather say Oriana is in pretty safe mode. So we have already given our message. Next please, last slide, दिखा दो last वाला, next yeah. Next
Yes, you will. Great. So, friends, this is what we have been talking for last almost an hour. But in one para and one single line, probably I'll again reiterate what we have been planning for this journey of Haryana Power for next 5 years. We scale with purpose, not pressure, as we embark on our journey forward to cater across RE value chain, from generation through storage to consumption of energy. Every opportunity we take on is matched to our ability to execute. ये हमने बोला, हमें solar आता था, हमको BAS आता था, हमको थोड़ा सा hydrogen CCUS में नहीं था, so we have got the expert on our board deliberately. Sustainability and without compromise. Sustainably and without compromise. Our focus remains on building a business that delivers with consistency and endures with the strength. So at the end, EPC player we started, integrated RE player we are, and present across RE value chain. Generation, storage, consumption. Gigatrend unfolding greater value for the shareholders and the partners. Thank you. So last में हमने बोला था megawatt to gigatrends. Now we are following gigatrends only, no more megawatts. So I think we are done with the presentation. Yes. We are running out of bit of time, so let's quickly take up the question and answer. Thank you, our founders. Now I request the moderator, Mr. Amit Kumar, to take up this question, which we received on our email. Amit sir. Thank you, Tanvi, and thanks the management team of Oriana. I think I was going through the questions also in parallel, and I'm not surprised to see that almost everything what was there asked by the investors in the question is already covered by the management team. So, I can see that most of the questions are covered. Still, there are few questions which I will appreciate if we highlight once again with better clarity. So we'll start with a context setting question from Jatin. He's from Invest Savvy PMS. And Jatin is asking that Oriana has been doing a lot of things, can the management throw some light on how the industry is shaping up and where the company is positioned in this space? I think in bits and pieces we have already answered this, but if you'd like to re-emphasize that once again, please. So thanks, Jatin, for the question. So in renewable energy sector, on the generation side, we are quite matured in solar energy. We are targeting things differently with funds, with AA, AAA rated clients. Yes, a little bit of tenders as well. And definitely we are having land and connectivity. So our solar is pretty secured. Then storage, BAS is something which is need of the hour. जो solar में अभी extra capacity हो रही है या फिर extra curtailment हो रही है, तो BAS will take care of it. That's why we are into BAS, and BAS में हम लोगों ने we have positioned ourselves well over a gigawatt hour of orders in hand, and then more than 2.8 gigawatt hour of pipeline. So we are very well placed in that thing. And BAS में थोड़ा solar से ज़्यादा आसान है because land के बहुत ज़्यादा issues नहीं होते. You can put 100 megawatt hour in 3 acres of land. और substation के पास होता तो right of way के बहुत ज़्यादा issues नहीं होते हैं. So BAS में we have already we have good pipeline, and execution has started. Procurement is about to close because all the tenders happened in last 7 to 8 months. So yeah, 6 months. 6 months. Like that. On the hydrogen side, yes, it's you can say we have already started taking orders, and we are in discussion with licenses and other things, and technology partner as well. Definitely, it's a 3 years timeline, और जो benchmark projects जो लगे हुए हैं across the globe, we are talking to them only, and we'll wanna place ourselves as a key player in this industry. And one more thing which is very important, the EBITDA margins are quite high in green hydrogen, and definitely अभी जो थोड़ी situation है उसमें जो western world है उसमें consolidation चल रहा है green hydrogen में, which is good thing. और जो solar के prices जैसे जैसे कम होंगे और BAS में मतलब एक तरफ तो ठीक है, लोग are unhappy with people are unhappy with the lowest prices, but
we are happy with that thing as well. Reason being, सोलर में प्राइसेस कम होंगे और BESS में प्राइसेस कम होंगे, ग्रीन हाइड्रोजन की वायबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी और डेफिनेटली वी आर सीइंग नाउ 27-28 में ग्रीन हाइड्रोजन will become a substitute of energies, different energies. Petrol and diesel तो अभी far away है transportation में, but on the shipping side, on sustainable aviation fuel side, if you have seen, सिंगापुर ने अभी green tax लगाया है, so levy लगाई है. I think $32, exactly मेरे को नंबर नहीं पता, $32 पर पैसेंजर लगाया है for sustainable aviation fuel. And sustainable aviation fuel बनाने के लिए one of the ways through methanol. And CO2 is very important. That's why we have covered CCUS as well. So definitely, story is quite good. हाँ, अभी के लिए for next 2 years order book पूरी भरी हुई है. हमें order book के लिए बाहर नहीं जाना है. और ग्रीन हाइड्रोजन के लिए हम लोग इस 2 साल में इतनी मेहनत कर रहे हैं कि 2028 में आपको ठीक ठाक इसमें रेवेन्यू जनरेट होगा. So अमित जी, I hope कंपनी की पोजिशनिंग मैंने एक सही हो दिया है. Perfect, Anirudh ji, thank you. And Jatin is also requesting a one-on-one analyst meet or any analyst meet which is happening there. He is requesting a participation. So Tanvi, you can take care of that separately. Moving on to the next question from Naman Kasat. So Naman is asking a few more details with a bit better structured clarification on Actis deal in terms of 3 buckets. One is completion timeline. The second is the deal margins, and the third is accounting treatment. This is about the Actis deal. Okay, so in FY26 we are expecting monetization of almost 100 plus megawatt in this particular year. रेस्ट भी हो जाएगा, लेकिन उसका शायद हो सकता है ट्रांजेक्शन कंप्लीट मार्च एंड में हो या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में हो. विल ट्राई टू एक्सपेडिट दैट थिंग, बट डेफिनेटली इट्स नॉट ओनली इन आवर हैंड. सो आप उसको आधा आधा बाइफरकेट कर सकते हो, 40% 60% आप बाइफरकेट कर सकते हैं FY27 में. डील मार्जिन्स आर गुड, बस अभी यही बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोल सकता है इसकी डील में, राइट. एंड मार्जिन्स आर गुड, बट हमने इससे ओरियाना की प्रॉफिटेबिलिटी क्या चेंज हो रही है वो आपको हिंट कर दिया है. इट इज गोइंग टू चेंज 6 to 8% extra mileage on our profitability side. Right. How will be the profit from this sale be accounted for? नहीं, completion. as per accounting standard, जो भी accounting standard 13 है उसके हिसाब से हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे as per our CFO. Yes, we treat it as a accounting standard AS 13 के according जो भी treatment होगा उससे फिर टेकअप करेंगे. But definitely ये रिकरिंग रहेगा ओरिजिनल पावर के लिए 2028 तो मिनिमम है. Perfect, thank you. So moving on to the next question from Akash Srivastav from his head of equity department from Intex Technologies. Okay, so Akash is asking question. Is it possible to understand whether the containerized BESS solutions shall be sourced from India or we plan to tie up an international supplier? Akashi, yes, it is possible कि हम इंडिया से ले सकते हैं, but looking at the technology stability and exposure जो इंडिया इंडस्ट्री अभी जो इवॉल्व हो रही है बैटरी कंटेनर डेवलपमेंट या कंस्ट्रक्शन या उसको फैब्रिकेशन के लिए, तो उसमें देयर आर लोट्स ऑफ थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द टेस्टिंग पर्पस, कैलिब्रेशन एंड स्टेबिलिटी एंड एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू. सो as on date we are finding more suitable if we choose the imported supplier rather than domestic supplier. But meantime, in the couple of month or year time, the technology or the development and infrastructure will evolve, and we will definitely in future looking domestically हम source कर पाएंगे. But as on date, it's not feasible to source from domestic suppliers. Thank you. So moving on to the next question from the same investor, and these two questions are linked with each other on BESS. So out of 20 gigawatt BESS targets, what is the expected share of EPC and built on operate model? Thanks, Akash, for the question. So we are targeting till 2030 10 gigawatt hour in EPC
5 gigawatt hour in build own operate mode and 5 gigawatt hour on that our recycling mode, project development mode, whatever we are doing with funds. So it can increase from 5 to 7 as well, but currently we are discussing on 5 gigawatt hour thing. So currently it's 5 gigawatt hour from selling this complete land connectivity and other things. Even from the day one also, we are trying to get some investor on the best portfolio also, similar like this. This will be like long-term association with them for like couple of years. And then it would be more of a EPC development mode rather than BOOT mode. Okay, so next question is about the green ammonia project of 60,000 MTPA, in which the mentioned expected revenue of 313 crore or annual revenue. Can you share some insight on when we can expect this revenue flow from this project and whether the IRR of this project is better than solar EPC or IPP? These revenues will come 2028 onwards because 3 साल का जो timeline है उसके बाद ही आएगा, and definitely the IRR is better. It's somewhere around, I'll give you a ballpark figure, somewhere around 23 to 24%, which is better than generation and storage. Okay, now moving on to some other questions which are asked by individual investors. So the first question is, what was the impact of heavy monsoon rain and GST changes on Oriana's H1 result, and how much portion is deferred to H2 of FY26? So definitely with the GST thing और जो बारिशें हुई हैं उसकी वजह से थोड़ा बहुत revenue तो आगे बढ़ा ही है, definitely, but it is not our plan for S2 is intact, और जो इस बार थोड़ा सा revenue कम हुआ है वो आगे जाके add on हो जाएगा, somewhere around 200 CR के आसपास impacted है. Targeting भी H1 के आसपास करें, but definitely whatever the situation is. But अमित जी क्या है ना, ये होता रहेगा, H1 का slip over H2 में जाएगा, H2 का slip over फिर से H1 में जाएगा. So this is something because we are into the project business, where what happens, you don't sell one of the component typically. Once it is get consolidated at one quantum, say of 50 crore, 100 crore material value, then only it gets built. तो वो spillover तो हमेशा चलता रहेगा. So I won't say that is much of thing to worry about. Eventually आज नहीं आया तो सर कल आने वाला. Shareholders are there for long term and we wish to keep them for long term. And second, GST वाला जो part है सर आपका, तो GST में it was bit of dilemma for the industry overall. Given customer कहीं ना कहीं थोड़ा सा पहुंच गया था, it was news कि solar में GST correction होने वाला है. So that put us things on hold for like a month or so. But अभी काफी better हो गया उनसे, GST कम होने से customer का value better हो गया, उसका asset cost जो cost value कम हो गया. Conversion में थोड़ा सा मेरे को लगता है easy होने वाला है. But again, I would say these are the very normal and basic thing कि हमेशा cost कम होना, duty बढ़ जाना, import duty बढ़ जाना, फिर कभी ELLM आ जाना, ALCM आ जाना. This is something which will happen because we are into the industry जो सबसे ज़्यादा hot industry है. We have already seen the 7 cycles of this industry. कब ड्यूटी बढ़ी, कब 16 रुपए पीपीए का रेट था, फिर वो एकदम से गिर गया, चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग एकदम से बहुत सस्ती हो गई, उसके बाद फिर जीएसटी जीरो था, वो बढ़ गया, वैट जीरो था, जीएसटी बढ़ गया, 5% आ गया, फिर ड्यूटी लग गई, पहले सब्सिडी देते थे, फिर ड्यूटी लग गई, उसके बाद फिर कोविड आ गया, कोविड के बाद फिर डिफरेंट तरीके से सेगमेंटिंग शुरू हुई, और उसके बाद फिर सोलर के प्राइसेस बहुत कम हो गए, एकदम से शार्प बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया, फिर प्राइसेस बहुत ज्यादा डिप हो गए, मतलब किसी बिल्डिंग में 1.99 और इस तरह के प्राइसेस भी चले गए थे, लेकिन इंडस्ट्री अपने आप करेक्ट हो गई. तो वी हैव सीन द 7 साइकिल्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, और बेस्ट में भी वो थोड़ा बहुत हो रहा है, तो इसलिए वी आर नॉट वरीड अबाउट दैट थिंग बिकॉज़ वी नो इट्स अ साइकिल. एक बार जो पीक पे जाएगा वो नीचे आएगा, फिर उसके बाद फिर दोबारा उठेगा. सर इम्पोर्टेंट यही है इसमें कि आपको हमको ये ध्यान देखना है कि ये चैलेंजेस, ये हिंड्रेंसेस आएंगे, हमेशा आते रहेंगे, क्योंकि बड़ा इंडस्ट्री है, बड़ा फोकस इंडस्ट्री है गवर्नमेंट के लिए भी. हिंड्रेंसेस के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज भी आए मुझसे, बट वो हिंड्रेंसेस कोई लॉन्ग टर्म हिंड्रेंसेस नहीं है. दिस हिंड्रेंसेस विल कम, किसी का कभी एक महीना, एक क्वार्टर या एक H1 खराब हो सकता है, बट डजंट मीन कि आपकी कंपनी का आउटलुक खराब करने वाला है. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन.
शॉर्ट टर्म में दिख सकता है छोटा मोटा किसी भी कंपनी में किसी भी टाइम पे। सोलर की कॉस्ट कम हो जाएगी, जब बहुत ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी तो सोलर बॉटम पे आ जाएगा, उस समय सोलर की कैपेसिटी ओवर हो जाएगी तो बैस आ जाएगा कि आपको एनर्जी इसमें डालनी पड़ेगी, फिर एक टाइम आएगा जब बैस बहुत ज्यादा लग चुका होगा, फिर सोलर की कैपेसिटी आप एड ऑन कर सकते हैं, तो इट विल बिकम ए हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए की तरह, और जैसे ही हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन की स्टोरी वही से शुरू हो जाएगी। सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Perfect. Thank you. Now, I think you have partly answered that. A related question to this, that recently the government policy was declared, talking about some reduction in the renewable capacity auctions due to grid bottlenecks and some other constraints. Now, do you see any major impact on Oriana's growth plan in the guidance in coming 2-3 years from that? मैंने वही बोला सर, ये ओवरऑल गाइडेंस में कुछ चेंज होने वाला नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपको महीने 2 महीने 4 महीने का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दिखेगा किसी भी इंडस्ट्री में, इस तरह की जब न्यूज आते हैं। जो चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट का, ये जो कर्टेलमेंट या 40 गीगावाट कैंसिलेशन का ये जो मैसेज है, दैट टू फॉर द यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स, और अभी बीइंग ओरियाना वी आर नॉट इनटू दैट सेगमेंट, और दैट इज नॉट समथिंग वेरी आवर फोकस सेगमेंट। वी आर लार्जली इनटू C&I सेगमेंट और डिस्कॉम वाला जो अपना है कुसुम जैसे प्रोजेक्ट, तो वहां पे इतना प्रॉब्लम मुझे भी नहीं दिखता है। बट स्टिल आई वुड से कि इस तरह का कोई भी मैसेज कोई भी न्यूज आएगी, थोड़ा बहुत हिंड्रेंसेस रहेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट ओरियाना को इम्पैक्ट नहीं करने वाला। सर हमारे कस्टमर जो है उनका टारगेट अभी 20-25% अचीव हुआ है, उनको 100% तो जाना ही है, क्योंकि सोलर पावर सस्ती है, मैंडेटरी है, क्यों 6-7 रुपए पावर में खर्चेंगे अगर 3 रुपए की पावर मिल रही है तो दैट इज द स्ट्रॉन्ग पॉइंट। और सर कभी हिंड्रेंसेस आएंगे तो मैं तो कह रहा हूँ उसको अपॉर्चुनिटी में देखते हैं ना, उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है। सो आई डू सी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी कि जो डेवलपमेंट कर्टेलमेंट की बात हुई वो जनरेशन साइड पे की है गवर्नमेंट ने, बस स्टोरेज और कंजम्पशन पे नहीं की है। तो अभी स्टोरेज में फोकस करते हैं, स्टोरेज में आगे बढ़ाते हैं। So there is always something available on the table. We just need to figure out how we are, focusing into the company strengths. और alignment will change होता रहेगा। आज मैंने आपको कोई एक प्लान कोट किया, हो सकता है after 6 months we might have to retweak, relook at those numbers and plans. और इसमें क्या है ना अमित जी, जो ट्रांसमिशन इंफ्रा है वो सेचुरेट हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेशन फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर साइड, और उसकी वजह से जो गवर्नमेंट का थोड़ा सा ये एक स्टेटमेंट आया है। बट एज रूपल सेड कि उसको आप स्टोरेज से साथ में अगर ऐड करते हैं तो सेम पोर्टफोलियो और द सेम ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर we can add more capacity to the same infra because we are adding storage capacity also. It's the surplus power we can store into batteries and we can utilize the same infra during the evening hours or off sunshine hours. मैंने आपको हिंट किया था कि प्रवीण एंड टीम इज वर्किंग ऑन समथिंग, सो there is something on the BESS side to cater these kind of hindrances on generation side. We are coming up. Thank you. Now, next question from the BESS only. The plenty of new companies have entered solar and BESS EPC. How are we differentiating ourselves from the new players as well? As there are legacy players like Tata and Waaree also planning to enter. जब देखो टाटा वारी भी मार्केट में ऑलरेडी है, मतलब पहला तो पॉइंट ये है, ऐसा कोई नहीं है, कोई किसी के रोड ब्लॉक्स नहीं है इस मार्केट में, इस इंडस्ट्री में। सिर्फ मुझे जो लगता है वो टाइमिंग मैटर्स अलॉट। किस टाइम पे किस तरह के सेगमेंट में किस तरह के कस्टमर्स के साथ एंटर कर रहे हो, दैट इज बिगर डिफरेंशियल। मैं जब बैच में एंटर किया था तो सबको प्राइसेस मालूम है, पब्लिक डोमेन पे है। आज का जो मार्केट बैच में चल रहा है प्राइसेस का, वो आपको मालूम है। बट आपने देखा होगा पिछले 2 महीने 3 महीने हमने कोई एग्रेसिव बिडिंग नहीं डाली है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब अच्छा मार्केट है, बड़ा मार्केट है, तभी कॉम्पिटिशन आता है, तभी लोग आते हैं। नथिंग टू वरी अबाउट इट। आई मीन अगेन इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग। कुछ अच्छा है मार्केट में तभी लोग हैं, जब लोग आ रहे हैं तो ठीक है, आज उनके लिए पाई है, लेट देम गेट सैचुरेटेड, वी विल हैव आवर ओन पाई अवेलेबल और वी विल क्रिएट आवर ओन पाई। Because you mentioned about the rate in BESS, so let me take a similar question linked to that. In the latest auction of BESS projects sold on a record low rate of 1.77 lakhs per megawatt per month, whether these bids are economically viable or not? सर वो वाइबल है नहीं, ये आंसर करने के लिए शायद वी आर नॉट द मोस्ट एप्रोप्रिएट पर्सन, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक्स उन्होंने कैसे बिठाई हमको नहीं पता। हमारी इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा ये हमें टाइट लग रहा था, तो हम इतना एग्रेसिव नहीं गए। सेकंड क्वेश्चन की इस तरह की जब बिडिंग आ रही है तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2017 में शायद
16-17 में टेक में 2.44 का एक टैरिफ ड्राइव हुआ था सोलर में, एंड इट वाज अ बिग कंसर्न इन द मार्केट ग्लोबली कि यार ये कैसे हो सकता है 2.44 भी हुआ, 2.3 भी हुआ, और आज हरियाणा ने अपने प्रोजेक्ट जो है 3 रुपए और 3.25 रुपए और 3.5 रुपए पीपी आज भी साइन कर रहा है. सो इट डिपेंड्स किस मार्केट में किस टाइमिंग पे आप क्या करना चाहते हैं. सर समटाइम मार्केट को ना अपना एक करेक्शन का टाइम चाहिए होता है. तो अभी जितने भी प्लेयर, आपने खुद ही बोला कि जो नए नए प्लेयर आ रहे हैं, तो आप जो लास्ट 3-4 ऑप्शन हुए हैं उसकी अगर लिस्ट निकालेंगे तो ऑल द प्लेयर्स आर न्यू प्लेयर्स, राइट. तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उनकी वर्किंग क्या है या किस तरीके से वो इन चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, बट दैट्स अ लर्निंग फॉर अस आल्सो कि किस क्या उनकी स्ट्रेटजी है. वी शुड आल्सो एनालाइज अवर स्ट्रेटजी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव. But we just want to wait for some time because there could be a possibility कि they are on aggressive participant side. Maybe as Rupal said कि bucket उनका fill हो जाएगा, so we will have our own track. We will start from that onward. Patience, not Thank pressure. you. Thank you. सर कंजम्पशन की स्टोरी तो बढ़िया बनेगी ना अगर प्राइसेस कम प्राइसेस कम हो जाएंगे तो हमारे लिए तो फायदा है ना, हम माल खरीदेंगे. Correct. And what I am able to understand from this today's call is that the more we are moving towards the consumption side, even the other side pressure is going to pass on some advantage there. So we will be able to play the balance that इधर कुछ अच्छा मिलेगा तो थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देंगे, उधर कुछ अच्छा मिलेगा तो थोड़ा सा उधर शिफ्ट कर देंगे. And that is where the if the focus is margin and the right quality growth, Oriana will keep playing this year on year. Got the message. चाइना में Now वही the रहना सर उनकी. आप चाइना की कैपेसिटी देखें तो कितनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ चुकी है. अब कैपेसिटी की वजह से सोलर के प्राइसेस कम हो गए, बैटरी के प्राइसेस कम हो गए, उनके हाइड्रोजन की स्टोरी कितनी अच्छी तरह निकल के आ रही है. सो दैट वे मुझे ऐसा लगता है कि अब वो टाइम नहीं है जब किसी को कंट्री को पकड़ने में 20 साल लगेंगे, 30 साल लगेंगे. विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर थिंग्स आप 3-4 साल 5 साल में उसके आसपास जा सकते हो. सो दैट्स हाउ द टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग एंड एवरीथिंग इज चेंजिंग. वी आर होपिंग वी आर इन द राइट डायरेक्शन. For sure. perfect. Perfect. So now the next question is on operating cash flow. So operating cash flows have not grown in line with profitability due to prolonged working capital cycles. What kind of measures are we going to take for this? तो डेफिनेटली प्रोजेक्ट का जो साइकिल है वो लंबा होता है और बारिशों के टाइम में डेफिनेटली प्रोजेक्ट थोड़ा सा और लंबा हो जाता है. प्रोजेक्ट बड़े भी होने लगते हैं. प्रोजेक्ट बड़े भी होने लगे हैं तो डेफिनेटली जो रिसीवेबल्स हैं उनको कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है. वी आर फोकसिंग ऑन दैट थिंग एज वेल एंड बेस्ट थिंग इन दिस लिस्टिंग स्पेस. ये चीजें टाइम टू टाइम पता लगती रहती हैं तो आगे से क्वेश्चंस आते रहते हैं तो हम और ज्यादा फोकस करते हैं उन सब चीजों में कि कैसे इन सब चीजों को लेके आए. तो डेफिनेटली आवर FP&A टीम इज क्वाइट एक्टिव ऑन दैट फ्रंट. Thank you. Now the few questions are around the data center plans. If you can throw some more light on it. There are multiple questions related to that I can see. So initially अभी हम इंडस्ट्री को समझ रहे हैं. डेफिनेटली वी आर प्लानिंग 1 मेगावाट एज ऑफ नाउ. 2030 का हमने टारगेट सेट किया है 100 मेगावाट का. लेकिन डेफिनेटली अभी उसके बारे में हम बहुत ज्यादा बोल नहीं पाएंगे. प्रवीण, इफ यू वुड लाइक टू टॉक समथिंग अबाउट इट. डेटा सेंटर में अमित जी, वी आर प्लानिंग, वी आर लुकिंग लाइक स्ट्रेटजिकली हम किस तरीके से एज एन कंज्यूमर उनको हम ऐड कर सकते हैं. तो देयर कुड बी सम पॉसिबिलिटी कि हम किसी तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट साइड एंड एडिंग वैल्यू टू द ओरियाना थ्रू द कंजम्पशन साइड. तो बिकॉज जो भी कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम RE पावर स्टोरेज इसके साथ में हम कंट्रीब्यूट करना. So that's how we are looking for the data center. Understood. इंटरेस्टिंग स्टोरी है अमित जी. इसमें भी अगर आप पॉलिसीज को देखें तो पावर कॉस्ट काफी ज्यादा डेटा सेंटर्स की और पावर एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर है हरियाणा पावर का. डेफिनेटली बीइंग अ ट्रू RE कंपनी नाउ, renewable energy company, we have to focus in all those new segments. It's a very big industry coming up because AI is there. है जोर है, अच्छा जोर है. Now again, a few questions are around the overall guidance of Oriana, which Oriana shared last time. I will just try to summarize that. So 2,500 crore revenue guidance was shared. Are we on track on this? And also in terms of margin, also are we on track on that? Interesting question. So definitely
We're trying to get over 2000 crores and profitability, yes, definitely we're trying to cross whatever the PAT margin हमारा जो अभी है उससे भी ज्यादा तो लास्ट ईयर की तरह 2x तो ग्रोथ हुई है, उससे 2x PAT ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे, सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन, अदर थिंग्स. तो ऐसी बीइंग अ कंपनी लाइक हरियाणा पावर, एक्सपेक्टेशंस क्वाइट हाई हैं, लेकिन मार्केट अंडरस्टैंडिंग और डायनामिक्स के साथ कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए. सो उसी के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं. Guidance is like दूसरा Anirudh, I would like to add, please, now as your company has entered into the project size of the few hundred crores, or now even 1,000 crore or single order value also we have entered. So what happens, sir? One of the major component is solar panel, transformer. So let's say there is a price which is, you know, bit on the higher side. So typically at times, just to maintain our profitability and strategical call, we try to tend to have bit of cushion available for that timeline. तो हो सकता है उसमें आपका रेवेन्यू एक महीने पहले की बजाय मार्च की बजाय वो अप्रैल शिफ्ट हो जाए या फरवरी शिफ्ट हो जाए. So those kind of things may happen, but otherwise I'm saying we are saying we have the healthy order book. Healthy मतलब almost say for FY 2027 also we have the orders. FY 27 partially 28 उसके बाद हाइड्रोजन तो ऑर्डर बड़ा हुआ है, तो ऐसा कोई रीजन नहीं है मेरे पास, but execution with the right profitability is the key. So there we don't want to compromise, and obviously there could be a bit of upside or downside of marginally the side. But it doesn't mean I'm giving any hint of the shrinkage on the revenue side. It is not that way. I'm just giving you kind of market scenario where the market is currently placed at and where Oriana is placed at. तो प्रोजेक्ट साइज बड़े हैं और छोटा सा भी एक कॉल आपको इमीडिएटली 50-100 करोड़ का फायदा या नुकसान देता है. तो देयर वी हैव टू बी लिटिल कॉशियस अबाउट इट, क्योंकि मार्केट में सबको पता है कि ओवर कैपेसिटी होने वाली है सोलर पैनल्स की, तो प्राइसेस ऑफन होंगे थोड़े से. तो हम लोग उस अपॉर्चुनिटी को भी लूज नहीं करना चाहते. बट यस, जो गाइडेंस है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. FY 26, FY 27, FY 28, definitely we're going to do PAT of over 1,000 crores in 2028. So we are on track, Amit ji. Okay, one interesting question is coming. What is the rationale of increasing the BESS targets to 20 gigawatt? That we have already covered. Yes, 800 megawatt hour is already there. जो हमने 300 megawatt hour के टारगेट लिया था पहले, वो 800 megawatt hour हो गया. जो पाइपलाइन थी जो कन्वर्ट होने वाली है 2 gigawatt hour, वो भी ऑलमोस्ट कन्वर्ट होने वाली है. तो ऑलरेडी एक साल में ही हम लोग 3.53 gigawatt hour टच कर रहे हैं. और एज रूपल हैज मेंशन्ड, और जो करंट सिनेरियो चल रहा है, गवर्नमेंट टेंडर्स बहुत ज्यादा आएंगे, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी, पॉलिसीज शिफ्ट हो रही हैं. उसी का एडवांटेज है कि बेस्ट में टारगेट रिवाइज करना, इट वाज नॉट लाइक यार मन में आया कर लिया. इट वाज लाइक क्लियर स्टेटमेंट, ईयर ऑन ईयर हम कितना करेंगे, किस क्लाइंट के लिए कितना करेंगे, C&I के लिए कितना करेंगे, यूटिलिटीज में कितना करेंगे, कब रुकना है, कब चलना है. सो दैट इज ऑलरेडी एवरीथिंग इज क्लियर. और ठीक है, अभी तो 20 गीगावाट का टारगेट है. लेट्स सी हरियाणा की 2-3 साल में जब नेट वर्थ 3,000 करोड़ क्रॉस करेगी, तो कहीं ऐसा ना हो टारगेट भी रिवाइज करना पड़े. Perfect. So, related to Actis, there are some confusions and a few investors are asking for clarification. So, I will try to consolidate these questions. With the deal on Actis, whether the current assets selling declaration is over and above 1 gigawatt, this is first part. The second is within the 1 gigawatt, are we planning to sell the stable revenue generating assets, or are we planning new projects developed on that? I think we have answered that, but I'm just still repeating the question. On that side, that 1 gigawatt is over and above what existing deal we are having with Actis. We have another 2 tranches of similar thing of 200 megawatt each. So cannot guide on that thing as of now. Definitely 1 gigawatt over and above है. Second question जो 200 megawatt जो ये वाला डील है ये उसके ऊपर है. And second question was, sir? Second was that are we selling stable revenue generating assets or developing new projects for जो 1 gigawatt का है वो शुरुआत से है, तो
Project development is COD तक हमें उसे hand over करना है. Will not gonna make it stable for a year or two. So on COD we'll sell it. Financial value. I mean, those project of 1 gigawatt will be more of an, you can call as an EPC project rather than boat model और वो or. और existing pipeline में से नहीं है, वो आगे का Additional pipeline. additional है. That's why Upal has quoted ना कि that will lead to a revenue of another 4,000 crores. Perfect. Now, do we have any plans to increase the debt levels to execute the projects in pipeline? Yes, definitely the integral part of any business. बस I would like to make sure one thing कि ओरियाना बहुत ज़्यादा leverage ना हो, debt equity ratio को हम हमेशा control करके रखें. Otherwise ये भी हो सकता था कि हम इन assets को लंबा चलाते और उसके बाद फिर निकालते. But we are taking care of it और उसके बाद फिर churning gives us better profit margin. क्यों उस assets को 3 साल बाद 4 साल बाद ना आएगा तो आज ले लो, then we can develop more assets. With these things with जितना भी 238 megawatts आएगा, you can develop 300 megawatt without diluting Oriana, without taking external funds और इस तरीके से. तो it's a growth opportunity for us और recycling always leads to better position in the market. What kind of CCUS technologies are we planning to play around, and what has this relation with the green hydrogen projects? So CCUS is basically we are doing for extracting CO2. जो CO2 हमें चाहिए methanol को बनाने के लिए. Definitely when the split molecule of water, hydrogen निकल जाता है, oxygen निकल जाता है. Fuse that hydrogen और CO2 को fuse करते हैं, then CH3OH methanol निकलता है. So CO2 CCUS करने का एक purpose ये है कि गवर्नमेंट का एक बड़ा outlay announce होने वाला है. Equivalent to green hydrogen or more than that. कार्बन प्राइसिंग आने वाली है तो डेफिनेटली अगर आप CCUS करोगे तो कार्बन प्राइसिंग आपको अच्छी मिल जाएगी. दैट विल वेरी एडिशनल पैट फॉर ओरियाना पावर एंड टेक्नोलॉजी. यस, वी आर बैंकिंग ऑन इंटरनेशनल टेक्नोलॉजीज एंड appropriate licenses for it. We're not gonna use new technology. We're not gonna do that. जो existing technologies हैं वर्ल्ड वाइड चल रही हैं उन्हीं को हम यूज करेंगे. एंड CCUS is something which is important for Oriana as well. And अगर आप reduce करते हो, then you can talk about blue hydrogen as well. If you do SMR and CO2 CCUS में आप कार्बन निकालते हो, then definitely in the Western world things are going towards blue hydrogen as well. In Canada, in Europe, everybody is talking about that thing. और RFNBO को भी change करने की बातें जो हो रही हैं, definitely it will give to a new thing. Blue hydrogen अगर आता है तो hydrogen की cost definitely that reduced to $2.2. With green and blue mix, definitely it will give fuel to India. So इसलिए CCUS is very important for Oriana Power in their future strategy. Someone mentioned on a very lighter note that the attendance was very high. Attendance का upper circuit लग गया है, तो request है next time से थोड़ा सा capacity ज़्यादा रखें con call में. So Tanvi, I think you'll have to take care of this next time. Okay, sir. Apologies for that, sir. Yeah, I think we have covered most of the questions pretty much from this side. One last request I see from few people that Oriana mentioned about the quarterly results very soon. So that request has come once again that the investors are expecting quarterly results for better guidance and better clarity from Oriana D. Well, as Praveen has mentioned in the last AGM as well, definitely we are trying Q1 से हम लोग quarterly result दें और from next year onwards from Q1 we're gonna propose quarterly results. Let's see कि हमारी finance team we'll try. will try. Definitely obviously बात है कि next year we are heading main board जाना है, तो main board की तैयारियां चालू हैं. So after that we have to give quarterly results, but definitely Q1 से we'll try. So that takes me to my last question, which I see here. What is the plan to migrate to the main board? जा रहे हैं, सब तैयारी चालू है और आपको पता ही है रेगुलेशन के लिए 3 years मैंडेटरी होते हैं.
that 3 years will be in August next year. So mainboard migration is definitely they're going to do. जो भी टाइम उसके बाद Varun ji, would you like to say anything? So by August 2026, we are eligible to file an application for the main board. Everything is in process, and most likely we will give you a good news after a month and so of August. That's what we are looking at, and very hopeful that we will be qualified and considered to be a main board company. Perfect. Thank you. I think we have summarized and covered most of the questions. Anything as a last closing note you want to share, you can please go ahead. Thank you. Generation storage consumption is the theme. And the point, Praveen. So, dear investors और आप लोग का जो भी ट्रस्ट हम पे रहा है through the last 2 years, 2.5 years in fact. So we believe in maintaining that trust वो मार्जिन के हिसाब से देखिए या जैसे भी आप बोलेंगे, लेकिन of course with the time we evolve with the penetration into the industry, higher capacity on the top line side, so margins will definitely go down. But to maintain that, we are creating a horizontal diversification, like battery storage हम ला रहे हैं, consumption side से जनरल वेंचर green molecule लेके आ रहे हैं. So those are the things which going to support this bottom line. And definitely this will contribute on the top line also. So we are a technology oriented company, you can say. We all with the adoption of technology before the commercialization so that we can leverage the benefit of commercial value. Our journey is defined by growth, and definitely generation, storage, and consumption. Year on year, we'll try our level best to give you good growth, and with the new technologies, as Praveen has mentioned, definitely interest बहुत आने वाला है, मजा बहुत आने वाला है. Thank you. Thank you, stakeholders. Thank you, promoters. Thank you, MS sir. With this, we can conclude this meeting. thank you everyone once again. Thank you everyone. Long time on the busy day, early week. Thank you everyone. Thank you so much. Thank Thank you you so much. shareholders. Thank you stakeholders. For Thank your you so time. much. Thank you Amit ji. Meji, thank you. Recording stop.